Hello everyone. Today we will see some more numericals, okay, of chapter gravitation. Okay, only numericals are left and theory portion. Two topics are left. Okay, weight and mass. Okay, so let's see the new numerical on this chapter. Suppose gravitational pull varies inversely as nth power of the distance. ठीक है, so that the time period of a planet in circular orbit of radius capital R around the sun will be proportional to r to the power n plus 1 upon 2. ठीक है, यानी कि हमको जो प्रूफ करना है दैट इज t is proportional to r to the power n plus 1 upon 2. ओके, और ये कैसे होगा, ये आई ऑलरेडी टोल्ड अबाउट द कैपलर्स थर्ड लॉ. बिफोर दिस I discussed that topic and also proof that formula. Okay, so let's see. We know that F is equal to gravitational force is equal to capital G. Okay, capital G mass of the sun, okay, into capital M is mass of the sun, okay, and small m is the mass of the planet. Okay, and what is says, suppose the gravitational pull varies inversely as nth power of the distance. Okay, means r to the power n. Okay, suppose this is equation number 1. Okay, now we already know that F is equal to m into a, that is equal to capital G capital M into m upon r to the power n. Okay, now cancel, and this is centripetal acceleration. The value of this is v square upon r, v square upon r. Okay, and this is equal to capital G m upon r to the power n. Okay, now this proof I already done in the circular motion. Okay, is the circular motion and this is centripetal force. Okay, and centripetal acceleration is equal to v square upon r, और यहाँ पे कैपिटल आर हो जाएगा. ओके ओके, and v is what, speed of the planet, and that is equal to distance what will it will cover, 2 pi r upon orbital period t. Okay, put this value in this equation, what we will find, 2 pi r upon capital T whole square upon r is equal to capital G m upon r to the power n. ठीक है, अब इसको और अच्छे से लिखते हैं. This will become like this, 4 pi square into r square, okay, upon t square, okay, into 1 upon r, and this is equal to capital G m upon r to the power n. Okay, now जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट करते हैं. ओके, व्हाट वी विल फाइंड, that 4 pi square into r upon t square is equal to G m upon r to the power n. ठीक, अब t स्क्वायर को इधर ले जाते हैं और बाकी सबको इधर ले आते हैं. ओके, दिस विल बिकम लाइक दिस, 4 pi square into r to the power n, okay, upon capital G into mass of the sun is equal to t square. Okay, now if the base is same, power will added. Okay, exponent and power में पढ़े होगे तुम लोग. Okay, so from here t square is equal to 4
pi square into r to the power n plus 1 upon कैपिटल G इंटू एम। ठीक है, अब देखो इधर ये कांस्टेंट, 4 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, ओके, G कांस्टेंट एंड मास ऑफ द सन इज कांस्टेंट। ओके, सो वी विल राइट लाइक दिस, इक्वल टू सी ना, हाँ, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर टू द पावर n प्लस 1। ठीक है, इसको इधर देखते हैं थोड़ा सा। ओके, यहाँ से ये आ गया हमको क्या, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर टू द पावर n प्लस 1, और ये यहाँ से हो जाएगा टी इज प्रोपोर्शनल टू आर टू द पावर n प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है, सो मैं हाउ विल प्रूव दिस। ओके, one student asked this question, and one more thing, in my previous question, okay, that two satellite of a planet have periods 32 days and 256 days। ठीक है, वहाँ पे जो ऑर्बिटल पीरियड एक है वो 32 डेज है, बाय मिस्टेक मैंने वहाँ पे 30 ले लिया है। ओके, तो करेक्शन कर लेना। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Wait, I will write next question. Okay, come to the next question. Before starting this question, one revision is there. We know that what Newton's equation of motions. Okay, there are three equations of motion. Okay, given by Newton, that is V is equal to U plus AT. Okay, S is equal to ut plus half at square, and v square is equal to u square plus 2as. Okay, I already proved this three formulas, okay, in previous chapter in motion. Okay, now if there is a free fall and object is falling downward, or we will throwing that object upward. Okay, so suppose this is h height, okay, and this will drop influence of what, in the presence of what, acceleration due to gravity, acceleration due to gravity। तो acceleration की जगह क्या आ जाएगा, acceleration due to gravity means s will change to height and acceleration will change to acceleration due to gravity। अब जब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो we will take acceleration minus g meter per second square। ओके, दिस इज फॉर दिस। ओके, एंड ऊपर से नीचे आएगा तो एक्सेलरेशन इज प्लस g मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो व्हाट विल चेंज इन दिस इक्वेशन, v इज इक्वल टू u प्लस gt, h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, ओके, एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh। ओके, जब मोशन डाउनवर्ड हो, फ्री फॉल, ओके, और जब नीचे से ऊपर जाएगा तो बस यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ओके, वन मोर थिंग, दिस इज नॉट कंपल्सरी, ओके, दिस इज जस्ट अ थ्योरी, हम इसके अपोजिट भी कर सकते हैं। ओके, वी कैन चेंज आवर फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड आंसर विल नॉट चेंज। ओके, सो गॉट इट, सो नाउ डू दिस क्वेश्चन। The question is, prove that if an object is thrown vertically upward, ठीक है,
एक ऑब्जेक्ट है जिसको हम वर्टिकली अपवर्ड फेंक रहे हैं, ठीक है ना। द टाइम ऑफ एसेंट, एसेंट मतलब नीचे से ऊपर जाने का समय, ओके, इज इक्वल टू द टाइम ऑफ डिसेंट, मीन्स नीचे से ऊपर तक जाने का समय मान लेते हैं t1 और ऊपर से नीचे तक आने का समय मान लेते हैं t2, ओके। दीज टूज आर इक्वल, यही हमको प्रूफ करना है, ठीक है। तो मान लें ऑब्जेक्ट को हमने ऐसे ऊपर फेंका, ठीक, ये गया ऊपर, ओके। ऊपर जाने के बाद फिर इट विल ड्रॉप डाउन साइड, ओके। सपोज इट विल टेक 10 सेकेंड टू कम this height, then it will take 10 seconds to come again that position, okay. So one more thing is there, initial velocity, okay। जैसे मालूम कोई इसके यहाँ से फेंकना है, ओके, तो मैंने फेंका, ओके। तो इनिशियल वेलोसिटी विल टेक, जब ये मेरे हाथ को जस्ट रिलीज होगा, ओके, पीछे से जितना आ रहा है वो नहीं लेंगे, ओके। एंड फाइनल वेलोसिटी इज व्हाट, बिफोर टचिंग द ग्राउंड, ओके। बट इट आई ऑलरेडी डिस्कस सो मेनी टाइम्स दिस, ओके। सो फॉर अपवर्ड मोशन, ओके, फॉर अपवर्ड मोशन, ठीक। अब यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी मान लेते हैं u है एंड द फाइनल वेलोसिटी इज 0, ओके, एंड द हाइट इज h, ओके। सो यूज दिस इक्वेशन एंड g acceleration ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज माइनस g मीटर पर सेकंड स्क्वायर, v is equal to u plus 80, okay। From here v is 0, initial velocity is u and a is minus g into t1, okay। Time will taken t1, time of ascent, from here t1 is equal to u upon g, suppose this is equation number 1, okay। Now let's calculate how much height it will receive, v square is equal to u square plus 2as, v is 0, okay, u square means u square only minus 2gh, from here h is equal to u square upon 2g, okay। this is question number 2, so इतने हाइट तक ये गया, okay। now for डाउनवर्ड मोशन बातें हैं सेकंड मोशन के लिए, फॉर डाउनवर्ड मोशन, ओके। अब यहाँ पे मान लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी u1 है और फाइनल वेलोसिटी v1 है, ओके, ठीक है ना। तो ये इनिशियल वेलोसिटी विल 0, ओके, एंड फाइनल वेलोसिटी इज v1, ओके। सो वी कैन यूज व्हाट, द फॉर्मूला s is equal to ut plus half at square, and what is the distance or height, that is u square upon 2g, and initial velocity u1 and that is equal to 0, okay, and here a is equal to plus g, ठीक है ना, plus half g t2 square, okay। the time of descent is we taken t2, okay। from here u square upon 2g is equal to half g t2 square, ठीक है। अब 2 कैंसिल हो गया and g will multiply here, from here t2 square is equal to u square upon g square, okay। अब यहाँ से t2 आ जाएगा तुम्हारा u upon g, this is suppose equation number 2 and 3, okay। so see from equation 1 and 3 what we are seeing that the time of ascent is equal to the time of descent, means here it will coming what,
u upon g, and here also u upon g. So you can write like this from equation 1 and 3. The time of ascent is equal to the time of descent, मीन्स t1 इज इक्वल टू t2. ठीक है, और ये हमको प्रूफ करना था. गॉट इट? सो क्लियर हो गया. तो बोथ टाइम विल कम सेम. ओके, गॉट इट. वन मोर थिंग, सो मेनी स्टूडेंट्स आर आस्किंग दैट सर इन विच कॉपी वी हैव टू डू असाइनमेंट. ठीक है, अब जो असाइनमेंट करना है दैट इज इन योर नोट्स कॉपी ओनली. ओके, one assignment I already given and one or two more I will give in this chapter. Okay, after that we will start work, power and energy. Okay, so come to the next question. Now come to the next question. This is NCERT question. Okay, the question is a stone is thrown vertically upward. ठीक है, a stone is thrown vertically upwards with an initial velocity. Okay, so initial velocity of stone is u is equal to 40 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, यहाँ पे u दिया हुआ है 40 मीटर पर सेकेंड. ओके, फाइंड मैक्सिमम हाइट को, मैक्सिमम हाइट सपोज इट विल रीच h. ओके, मैक्सिमम हाइट रीच बाय द स्टोन. ठीक है, एंड हियर फाइनल वेलोसिटी इज व्हाट, 0. सो फाइनल वेलोसिटी ऑफ द स्टोन, फाइनल वेलोसिटी of the stone v is equal to 0 meter per second. Okay, now what is the net displacement and total distance covered by the stone? Very easy question. ठीक है, हम h निकल जाएगा तो हमारा सब निकल जाएगा. ओके, from and you can take g is equal to 10 meter per second square. Okay, if g is not given here, okay, then you will take 9.8 only. Okay, if the value of g is given, then you will take 10 meter per second. In this question value of g is given. Okay, 10 meter per second square, sorry 10 meter per second square. Yes. Okay, now use, we have to find h, maximum height. V square is equal to u square plus 2as. Okay, here v is what, 0. Okay, and u is 40 meter per second whole square. Okay, plus 2a, acceleration is what, minus g meter per second square. So here minus 2g, g means 10 into 10 into h. We have to find the value of h. From here h is equal to 40 into 40 upon 2 into 10, कैंसिल आउट, ये आ जाएगा तुम्हारा 80 मीटर. ओके, सो व्हाट मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द स्टोन इज 80 मीटर. ओके, नाउ हियर व्हाट इज आस्किंग, व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, अब यहाँ से चला और यहीं आ गया. ओके, इट्स मीन द नेट डिस्प्लेसमेंट इज displacement of the stone, displacement of stone is equal to 0. Okay, everyone knows why it is 0. Okay, now and distance covered by this, distance covered by the stone is what, पहले यहाँ से आ गया 80 मीटर. ठीक, फिर यहाँ से नीचे आया 80 मीटर, मीन्स 80 प्लस 80, 80 plus 80 meter, and that is equal to 160 meter. Okay, got it? So this is the answer.
this question solution. Okay, so you also do it. If you have any doubt, you can ask me. Okay, I will discuss either in this video classes or in live classes. Okay, so start doing. Only numericals are left, so do it. Okay, if you have any confusion, you can ask me. Thank you.